स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था अभी हमने पेट्रोल पंप शुरू कर दिया था ताकि हमारे ट्रैक्टर्स को डीजल वगैरह डलवाने में कोई दिक्कत ना हो, और आगे हम पेट्रोल पंप पर ही वर्क कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ये पिलर भरेंगे और उसके बाद पेट्रोल पंप की बाउंड्रीज पर वर्क कंटिन्यू करेंगे और साथ में ग्रीनरी भी ऐड करते हैं पेट्रोल पंप में ताकि पेट्रोल पंप की लुक अच्छी आए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम इंटे लेके आते हैं। तो काफ़ी टाइम से हमने अर्जुन ट्रैक्टर यूज़ नहीं किया है तो हम इसे यूज़ करते हैं।
हमने 2 बाउंड्रीज कंप्लीट कर दी हैं और थर्ड बाउंड्री पर वर्क करने के लिए हमारे पास ईंटें कम पड़ रही है। तो सबसे पहले हम ईंटें लेके आएंगे और उसके बाद थर्ड बाउंड्री पर वर्क कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं और लेकर आते हैं ईंटें।
हमने पेट्रोल पंप पर ग्रीनरी ऐड कर दी है और ग्रीनरी ऐड करने के बाद पेट्रोल पंप का लुक बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसके बाद हम सेंटर वाले पिलर पर वर्क शुरू करेंगे। तो हमारा पिलर रेडी हो चुका है और पिलर के साथ साथ हमने कमरे पर भी प्लास्टर कर दिया है और हमारा कमरा भी रेडी हो चुका है। अब पेट्रोल पंप की छत और कमरे को कलर करना बाकी है। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कलर और छत का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।